Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 5. This is a book, Joyfull Mathematics. And today we are going to start chapter number 15, Circles, Triangles and Quadrilaterals. So let's start the chapter. Here an exercise is given. You have to look at the following plane figures and fill in the blanks. यहाँ पे कुछ figures दिए गए हैं. You have to look at them and then you have to complete the sentences. A triangle has dash sides and dash vertices. Triangle के कितने sides हैं? 3 sides and 3 vertices means 3 points. A square has dash sides, 4 sides. Similarly, you have to answer the rest questions. Now, name and classify the given triangles. ये जो triangles दिए गए हैं, इनके name लिखने हैं और इन्हें classify करने हैं. So here, you have to do this exercise on your own. What is a circle? A circle is a plane figure which consists of a set of points. एक circle क्या है? एक plane figure है जिसमें बहुत सारे points होते हैं, which are at the same distance from a fixed point. जो एक ही डिस्टेंस पे होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से. इट हैज नो साइड्स एंड वर्टेक्स. इसके ना कोई साइड्स होते हैं ना ही कोई वर्टेक्स होते हैं. दिस फिक्स पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. और इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं सर्कल का. ये यू कैन सी दिस इज द सर्कल एंड द सेंटर पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर. व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल? The curved lines which form the boundary of the circle is called its circumference. जो curved line होती है, ये जो line आपको दिख रही है, इसे ही हम circumference कहते हैं. A से B, B से C और फिर वापस A तक हम circle को जब draw करते हैं, this is called the circumference. Now, radius of a circle. Radius क्या है? The line segment joining the center of the circle to any point on the circle is called radius of the circle. वो line segment जो join कर रही है circle के center को किसी भी दूसरे point से, उसे हम radius कहते हैं circle का. For example, OA, OB, OP, OQ. These are the radii of the circle. Now, सिंगुलर में हम रेडियस कहते हैं और जब बहुत सारे हो तो हम उसे रेडियाई कहते हैं. ये यू कैन सी OA, OB, OP and OQ is given. We can draw infinite number of radii on a circle. हम सर्कल में infinite radii बना सकते हैं. The length of all the radii of a circle are equal. और जितनी भी radii बनाएंगे उन सबकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. Next comes the diameter of the circle. Diameter क्या है? A line segment which passes through the center. वो line segment जो बीच से पास हो रहा है, सर्कल के एकदम बीच से जो डिवाइड करता है, उस line segment को हम diameter कहते हैं. And has its end point on the circle. और उसका जो end point है वो सर्कल को टच करना चाहिए. POQ is the diameter of the circle with center. यहाँ पे POQ जो है ये diameter है और जिसका सेंटर क्या है? O. We can draw infinite number of diameters of a circle. Infinite diameters भी बना सकते हैं और सबके जो लेंथ है वो सेम होंगे. Next comes the chord of a circle. What is a chord? Here you can see AB is a chord, PQ is a chord. So a line segment whose end points lie on the circle. कोई भी एक line segment जिसके एंड पॉइंट सर्कल को मीट करते हैं उसे हम कॉर्ड कहते हैं. AB and M and PQ are chords of the circle with center. ये सारे जो है chords हैं जिसका सेंटर क्या है? O. Observe that MN is also the diameter of the circle. और हम क्या देख सकते हैं कि ये जो MN है इसे हम diameter भी कहते हैं. And this is the longest chord of the circle. What is arc of a circle? Arc क्या होता है? A part of the circumference of the circle. Circumference के एक part को हम arc कहते हैं. And it lies between any 2 points on the circle
द आर्क इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ये सिंबल हम बनाते हैं आर्क के लिए। पॉइंट ए बी डिवाइड द सर्कमफरेंस इनटू टू आर्क। अब आप देख सकते हो पॉइंट ए से बी तक दो आर्क बने हुए हैं, ए सी एंड सी बी। सो ए सी बी इज अ माइनर आर्क एंड ए डी बी इज द मेजर आर्क। अब ए सी बी जो है एक छोटा आर्क है और ए डी बी एक बड़ा आर्क है, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड एज माइनर एंड मेजर आर्क। नेक्स्ट कम्स द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है? द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क्स। अभी जो डायमीटर है वो सर्कल को दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करता है, आर्क एक और आर्क दूसरा। Each of these arc is called a semicircle, और हर एक आर्क को हम सेमी सर्कल कहते हैं। Here you can see this from here to here is semicircle and from here to here is another semicircle. The region enclosed by the semicircle and the diameter together is called semicircular region. और ये जो एरिया रहता है उसे हम semicircular एरिया या फिर रीजन भी कहते हैं। What is concentric circle? Two or more circles with the same center. एक से ज्यादा सर्कल बनेंगे, सेंटर सबका सेम होगा, बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनकी जो रेडियस आप देखोगे सबकी डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है। सो तीनों के रेडियाई अलग होंगे बट वो सारे जो सर्कल है सबका सेंटर सेम होगा। सो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक circles. Next is interior and exterior of a circle. Circle के अंदर हम interior कहते हैं and circle के बाहर को हम exterior कहते हैं। The region enclosed by the circumference of a circle is called interior of the circle. वो part जो circle के अंदर है उसे हम interior कहते हैं। The region outside the circumference of the circle is called the exterior of the circle. वो area जो circle के बाहर है, जो सर्कमफरेंस के बाहर है उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं। सो हियर पॉइंट M लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे पॉइंट M और O जो है सर्कल के इंटीरियर में है। पॉइंट X लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट X जो है सर्कल पे है एंड पॉइंट Y लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, पॉइंट Y जो है बाहर है। नाउ हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल? सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? So here let's see this first example. Draw a circle of radius 4 cm using a compass. So compass की मदद से हमें क्या करना है? एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस दिया है 4 cm. So what we have to do first, जो कॉम्पस है उसे हम, जो हमारा स्केल है वहां पे 0, 1 से पहले 0 है वहां पे रखेंगे और फिर कॉम्पस को स्ट्रेच करके 4 cm तक लेके जाएंगे। So now we have measured 4 centimeter, अब हमने मेजर कर लिया अपने कॉम्पस में। Now what we have to do, without changing the angle, हमें अपने पेंसिल के एंगल को चेंज नहीं करना है। और क्या करना है? ये जो कॉम्पस का जो पॉइंट है उसे हमें कॉपी पे अपने रखना है और इसे मूव नहीं करना है। we have to only move the pencil. पेंसिल को हम मूव करेंगे और ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। So now we have to move the circle on the whole page जब तक एक सर्कल ना बन जाए उस पेज पे। So now we have drawn the circle with 4 centimeter of radius. अब आप इस सर्कल को कहीं से भी मेजर करोगे ये हर जगह से आपको 4 centimeter ही मिलेगा इसका radius. Now what is the relationship between radius and diameter? Radius और diameter के बीच में क्या relation है? In the given figure AOB is diameter. ये जो फिगर है इसमें AOB क्या है? diameter है। So here AB को हम लिख सकते हैं as AO and OB, where AO and OB are radii of the circle. अब हमें पता है कि सेंटर से अगर हम सर्कल के किसी भी एंड को टच करेंगे तो वो रेडियाई बन जाएगा। सो हमने दोनों एंड्स को टच किया है, सेंटर से 2 टाइम्स टच किया है तो मीन्स हमने 2 टाइम्स रेडियाई को ऐड करना है। सो हियर द फॉर्मूला ऑफ रेडियस इज ऑफ डायमीटर इज 2 रेडियस, या फिर रेडियस का फॉर्मूला है, अब हम रेडियस को यहीं छोड़ेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा डायमीटर अपॉन 2।
So this is the formula now that we are going to use. Here, let's see this example. Find the diameter of the circle whose radius is 6. तो हमें diameter find out करना circle का जिसका radius क्या है 6 cm. So radius is 6. अब हमें पता है कि formula क्या है, diameter is equal to 2 multiply radius. So this radius we have to multiply 2 times. So 2 multiply radius is given as 12 centimeters. So the diameter is 12 centimeters. Now let's move on to the next example. Find the radius of the circle with diameter 14 centimeter. यहाँ पे जो है radius हमें find out करना है, diameter is given. So now the formula of radius is diameter upon 2. So diameter is 14. अब इसे 2 से हमने divide किया, we get 7. So 7 is the radius of this circle. Now let's move on to this exercise 15.1. Study the given figure and fill in the blanks. Here one figure is given. आपको इसे अच्छे से देखना है. And according to this, you have to fill in the blanks. First question is center of the circle is. Center क्या है? Next, the radius of the circle is. Radius circle का क्या है? P, OP and OQ. OP or OQ. Diameter of the circle is PQ. PQ. Next, the chord of the circle is AB, PQ. AB. Similarly, we have to find the answer of the rest of the questions. Now, question number 2 is draw the circle with the following radii using a compass. So, as I have told you, you have to take 4 centimeter on your scale. What you have to do, you have to put your compass end point at 0 और pencil का जो end point है, we will keep it at 4 and we have to take the measurement or without changing the measurement, we have to place the compass on a paper and then we have to just move the pencil and then we will easily draw 4 centimeter. Similarly, you have to find out the rest that is given here. Now here it's 6.2 centimeter. So we have to take 6 centimeter and 2 more points. दो और points उसके बगल में जो दो और lines हैं उसे हमें लेना है. So it will be 6.2. Similarly 7.6 में 7 लेना है and 7.5 लेंगे पहले और 5 के बाद one more point we have to take. So it will be 7.6. Now here we have to complete the table. So diameter is not given. We have the radius is given here. So here the formula of diameter is 2r. So radius is given. So 2 multiply 5, it will be 10. So it's 10 centimeter. Similarly, यहाँ पे diameter दिया है. You have to find out the radius. So radius is equal to diameter upon 2. So diameter is 16 upon 2 will be 8. So here the radius will be 8 millimeter. Similarly, you have to find the answer of the rest. Now next is triangle. A triangle is a closed figure bounded by 3 sides. Triangle क्या है? एक ऐसा figure जो 3 sides से closed. It is formed by joining 3 non-collinear points. इसे तब बनाया जाता है जब 3 non-collinear points को join किया जाता है. It is named by using 3 capital letters. 3 capital letters को use करके से बनाया जाता है. And the vertices and is denoted by the symbol this. ये symbol है triangle. So ABC is the triangle given here. यहाँ पे ये triangle है. इसके 3 vertices हैं. This is vertices. ये vertices हैं triangle के. Now 3 sides हैं. Side AB ये side है. Side BC ये side है और side AC ये भी एक side है. अब 3 angles बन रहे हैं. कौन कौन से? Angle A, Angle B और Angle C. या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, BAC और ACB. Triangles are classified according to sides and angles. जो triangles हैं हम इनके sides और angles के accordingly classify करते हैं.
How can we classify the angles? Let's learn on the basis of the sides. The first one is equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होता है? A triangle in which all the three sides are equal. ऐसे triangle जिसके तीनों sides क्या हो? Equal हो. तो ऐसे triangle को हम equilateral triangle कहते हैं. Means AB is equal to BC and BC is equal to CA. Next comes the isosceles triangle. A triangle in which two sides are equal are called isosceles triangle. ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड तो इक्वल है बट तीसरा साइड इक्वल नहीं है. सो यहाँ पे देखो तीसरा साइड 3 सेंटीमीटर है, बाकी दोनों साइड्स 6 सेंटीमीटर थे. सो दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो हियर PQ and PR are equal. Now next is scalene triangle. A triangle in which all the sides are of different length. ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे जो साइड्स हैं वो अलग अलग लेंथ के हैं. कोई 2 है तो कोई 5 है और कोई 7 है. So these type of triangles are called scalene triangle, in which LM is not equal to MN and it is also not equal to NL. Now, classification of triangles on the basis of angles. अब angles के according कैसे हम इन्हें classify करते हैं? The first is acute angled triangle. So acute triangle क्या होता है? In which all the three angles are acute, which means less than 90 degree. So 90 degree से कम होने चाहिए सारे एंगल्स. ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं. So here एंगल P, एंगल Q and एंगल R, ये तीनों जो है 90 डिग्री से कम है. Next comes the right angle triangle. Right angle triangle में एक एंगल 90 डिग्री का होता है. So in this triangle, one of the three angles is 90 degree and is called the right angle triangle. So here B is equal to 90 degree. This means this is a right angle triangle. Next comes the obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle क्या है? A triangle in which one of the three sides, जो तीनों sides उसमें से एक side जो है is more than 90 degree. 90 degree से ज़्यादा है. तो ऐसे हम angle को क्या कहते हैं? Obtuse angled triangle. So here you can see C is more than 90 degree, which is 130 degree, so it is obtuse angle. So we have learned about three angles: acute, right angle and obtuse angle. Next comes the properties of a triangle. क्या क्या properties हैं? The sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. So अगर हम triangle की बात करें तो इसके जितने भी angles होते हैं 180 degree के बराबर होते हैं. So you can draw any number of triangles and measure their angles. हम कितने भी triangle बना सकते हैं, उनके angles को measure भी कर सकते हैं. You will find the sum of the angles of each triangle is 180 degree. हम जब उन्हें प्लस करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उनके जितने भी angles थे जब हम उन्हें प्लस करते हैं we get 180 degree. In the given figure we see that angle A is 60 degree, angle B is 90 degree and angle C is 30 degree. Here is a figure where we can see. So here angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इन सब angles को plus किया हमें 180 degree आंसर मिला. So this property is correct that किसी भी अगर हम angle को plus करें तीनों angles को जब भी plus करेंगे we will get 180 degree as answer. Next property क्या कह रही है? The sum of the length of any two sides of the triangle is always greater than the third side. ये sum होता है sum of the length of any two sides. जो दो sides हैं उनके अगर हम length को हम plus करें is always greater than the third side. वो हमेशा third side से बड़ा होता है. For example अगर हम 2.5 को 3 को plus करेंगे तो ये 3.5 से ज़्यादा ही रहेगा हमेशा. Similarly 4.2 और 3 सेंटीमीटर को प्लस करते हैं तो इट विल बी मोर देन 3. सिमिलरली अगर हम 3.5 और 3 को भी प्लस करें सो इट विल बी ग्रेटर देन 5.5. सो अगर हम किसी भी दो साइड्स को प्लस करेंगे वी विल गेट it will be greater than the third side. Now let's learn how can we find the missing angle. अब angles हमें missing मिल रहे हैं means दो angle दिए और एक नहीं है तो हम कैसे उसे find out करेंगे? So for finding the angles that is missing, we already know that
the sum of all the angles is equal to 180 degree. So सारे angles को plus करेंगे तो हमें 180 degree मिलेगा. So here two angles are given. Let's add them, and when we add all these we get. So here we have to put a this equal to sign. So when we add 70 plus 50 we get 120. Now we have to subtract this 120 from 180. We will get 60 as the angle C. Now let's move on to this exercise 15.2. So in triangle ABC, name side of the triangles. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बना है, इसके साइड्स बता रहे हैं. तो कौन कौन सा साइड है? साइड है AB, next BC, and next will be CA. Similarly, vertex of the triangle ABC. So vertex का A, B and C. Angles of the triangle बताने हैं आपको, तो आप लिख सकते हो एंगल A, एंगल B and angle C. Now question number 2 says classify the triangles according to the measurement of the sides. इनके sides देखने हैं, उसके according we have to classify these triangles. So when we see the first triangle, हम देख सकते हैं जो सारे sides हैं equal है, तो जहाँ equal है वो equilateral बन जाता है. अब आप देख सकते हो दो sides equal हैं, तो ये जो triangle जिसके दो sides equal हैं इसे हम कहते हैं isosceles triangle. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं scalloped, and this is called right angled. Next is classify the triangles according to the measurement of their length. तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इन्हें लिखना है. तो आप देखिए कोई भी जो है ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज. नेक्स्ट दिस इज 90 डिग्री, तो इट इज राइट एंगल. चिल्ड्रन दिस इज आल्सो नोन एज, here you can see two sides are equal in this one and it is called isosceles. Next, here you can see all the angles are less than 90 degrees, so it is acute. Similarly, this is 90 degrees, so it is again right angled. Now, question number 4 is find the missing angle in each of the triangles. So, let's do this one. Here, as we know that the sum of all the angles is equal to 180 degree. So, angle X plus angle Y plus angle Z will be equal to 180 degree. So, now 60 plus 60 plus angle Z is equal to 180 degree. Now it will be 120 plus angle Z is equal to 180 degree. अब एंगल Z को हम यही छोड़ देंगे. 180 degree minus 120 we have to do. Now it will be 60. So here this angle is 60 degree. Angle Z is equal to 60 degree. Similarly, you have to do the rest of the questions. Now, next question is which of the following can be possibly be sides of a triangle? So here you can see कि children it's written कि जब भी हम किसी भी triangle के कोई भी दो sides को add करते हैं वो हमेशा जो है उसके दूसरे side से bigger होता है. So let's add these. So it's 6 plus 5 is 11. तो ये 10 से बड़ा है, तो this is a triangle. Similarly, let's add these two numbers. अब इन दोनों को हम add करते हैं, so we will get 27. So it is greater than 24. So this is also a triangle.
Similarly, let's add this one. 8 plus 4 is 12. It is greater than this. So this will also become a triangle. Similarly, you have to add the rest of the numbers and you will see अगर वो bigger है जो remaining number है तो you will get a triangle, otherwise it's not a triangle. Now question number 6 is the measure of two angles of a triangle are 95 degree and 70 degree. तो एक triangle है जिसके दो measures दिए गए हैं. Find the third angle. So same we have to do 180 degree minus 95 plus 70. We have to do. We will get the third angle. Question number 7 is one of the acute angles of the right angle triangle is 42. Find the other acute angle. So एक right angle triangle है. अब उसका एक एंगल दिया गया है 42. अब क्योंकि ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री होगा. आपको ये एंगल ढूंढना है. So 180 minus these two we have to do. Now the rest questions children you have to do on your. Now let's learn what are quadrilaterals. Look at the following figures. Here you can see where there are various figures in front of you and all the figures have four sides. सबके four sides हैं. What is common in them? They have four sides. They are called quadrilaterals. So ऐसा कोई भी फिगर जिसके four sides होते हैं उसे हम quadrilateral कहते हैं. A quadrilateral is a simple closed figure. ये simple closed figure होता है bounded by four line segments, जो four line segments से जुड़ा हुआ होता है. It is named by using four capital letters. चार capital letters है जिनसे इन्हें हम name देते हैं. It's A, B, C, D or any of the letters. Clockwise or anti-clockwise. A quadrilateral ABCD is given here. It has four vertices and it has four sides. It has four angles. Now a quadrilateral is divided here into various parts. The first one is parallelogram, next is trapezium and the third one is kite. Here parallelogram is again divided into different parts. The first is rectangle and the second one is rhombus. And these both are known as square. इन दोनों को ही हम square कहते हैं. Now let's learn about the types of quadrilaterals. कौन से types के quadrilaterals हैं? The first is parallelogram. So you can see the opposite sides are equal here in this parallelogram. This is a quadrilateral with both pair of opposite sides are parallel. So ये जो फिगर होती है इसमें जो दोनों ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. पैरेलल मींस वो कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं. सो हियर यू कैन सी AB इज पैरेलल टू CD. तो पैरेलल साइन हमने यहाँ पे बनाया है. सिमिलरली AC इज पैरेलल टू BD. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हियर. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. AB is equal to B as angle C is equal to angle B and angle A is equal to angle B. ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है. सो हियर AB is equal to CD and AC is equal to BD. Next is rectangle. So this is a figure of rectangle. It is a parallelogram whose each angle is 90 degree. ये जो parallelogram है इसके जितने भी angles हैं वो सारे क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं. Angle A is equal to angle B, which is equal to angle C, and which is equal to angle D, and all are equal to 90 degree. Opposite sides are equal. इनके जो opposite sides होते हैं वो equal होते हैं. Opposite sides are parallel. जो opposite sides है वो parallel भी होते हैं. Has four right angles. इसके चार right angles होते हैं. Diagonals are equal. ये जो diagonals हैं B से C तक एक diagonal और A से D तक का diagonal ये दोनों equal होते हैं. Next figure is of rhombus. Next quadrilateral is rhombus. So here you can see it is a parallelogram with all four sides of equal length. ये एक parallelogram है जिसके जितने भी sides हैं वो सारे equal होते हैं. For example 4 centimeter है, सारे sides 4 centimeter के हैं. Opposite sides are parallel. इनके जो opposite sides होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के parallel होते हैं. Opposite angles are equal. और जो opposite angle होते हैं इसमें भी equal होते हैं. Next is square.
It is a parallelogram in which all the angles are 90 degree, right angle and all the sides are equal. इसके जो भी sides होते हैं वो equal होते हैं और जो angle होते हैं वो 90 degree के होते हैं, means right angle होते हैं. So opposite sides are parallel. इनके opposite sides parallel होते हैं and has 4 right angles और 4 right angles होते हैं. Diagonals are also equal. Diagonal L, N and M, O. These are equal. Next comes the trapezium. Trapezium क्या है? It is a quadrilateral whose only one pair of opposite sides are equal. So ये जो trapezium है, इसका सिर्फ एक साइड ही equal parallel होता है, बाकी दूसरा साइड parallel नहीं होता है. And only one pair of opposite sides are parallel here, which is JK and MN. Next is kite. This is a figure of a kite. Kite जैसा दिख रहा है ये. And it is a quadrilateral with two distinct pair of equal adjacent sides. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की जो दो sides हैं वो equal हैं और जो नीचे की जो दो sides हैं वो एक दूसरे के equal हैं. Two pair of adjacent sides are equal. ST is equal to TU and same SY is equal to UY. One pair of opposite angles are equal. Angle S is equal to angle U. Here you can see angle S is equal to angle U. Now let's learn the properties of quadrilateral. All quadrilaterals have 4 sides, 2 diagonals and 2 angles. जितने भी quadrilaterals होते हैं उनके 4 sides होते हैं, 2 diagonals होते हैं और 4 angles होते हैं. Here you can see sum of all the angles is equal to 360 degree. अगर हम सारे angles को प्लस करें तो वो हमेशा 360 के equal होंगे. Here an example is given. Find the missing angle of the given quadrilateral. So यहाँ पे एक quadrilateral है जिसमें angles दिए हैं. Angle P is 80 degree, angle Q is 85, angle R is 60 degree. You have to find angle S. So we have to add all these 3 and then subtract it by 360. So on subtracting we get 135. So this angle is of 135 degree. Construction of a square on a rectangle. अब कैसे हम कोई square या फिर rectangle बना सकते हैं? So for constructing a rectangle ABC with the sides measure 6 cm and 4 cm. हमें क्या बनाना है? एक rectangle बनाना है जिसमें एक साइड है उसका 6.5 सेंटीमीटर का और दूसरा है 4 सेंटीमीटर का. तो हमें क्या करना है? पहले एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो कितनी मेजरमेंट की होनी चाहिए? 6.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. यूजिंग अ रूलर स्केल की मदद से. प्लेस ए प्रोटेक्टर एट पॉइंट ए. हमारा जो प्रोटेक्टर है उसे हमें पॉइंट ए पे रखना है. एंड देन टू पॉइंट बी एंड ड्रॉ एंगल 90 डिग्री. हमें इन दोनों पॉइंट्स पे रख के 90 डिग्री का एंगल बनाना है. फ्रॉम ईच पॉइंट यूज अ कॉम्पस विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर. एक कॉम्पस लेना है और उस पे रेडियस लेना है 4 सेंटीमीटर का. प्लेस इट एट पॉइंट ए. उसे ए पॉइंट पे रखना है एंड देन इंटरसेक्ट द पॉइंट बी. और हमें पॉइंट बी को इंटरसेक्ट करना है एंड सी ऑल्सो रेस्पेक्टिवली. हियर यू कैन सी पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया 6.5. अब जो हमने प्रोटेक्टर से जो है मार्क किया 90 डिग्री. अब हम उस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर पे. सो वी हैव डन दिस. जॉइन CD यू हैव गेट द रेक्टेंगल. हमें रेक्टेंगल मिल गया ABCD. अब जब हमने इन्हें ज्वाइन कर लिया सो ये यू कैन सी 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ एंड 4 इज द ब्रेथ. A square can be constructed in a similar way. ऐसे हम square को भी बना सकते हैं. Now let's do this exercise 15.3. In the given figure, ABCD is a quadrilateral. ये एक figure है जिसमें ABCD quadrilateral है. Here you can see. Name the sides of quadrilateral. तो side क्या है? AB, BC, CD and AD. Angles बताने हैं. Angle A, angle B, angle B and angle C. Pair of opposite sides. Opposite sides बताने. तो AB and BC, AD and BC. These are the opposite sides. Now here question number 2 is ABCD is a parallelogram. यहाँ पे एक parallelogram है आपके सामने.
what special name would you give if it is AB is equal to AD? AB जो है AD के इक्वल है, मीन्स ये लाइन अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये लाइन भी 4 सेंटीमीटर है। दूसरा है एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A जो है 90 डिग्री का है। सो AB एंड AD एंड एंगल A, सो यहाँ पे AB भी दिया हुआ है और AD दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और एंगल A अगर 90 डिग्री है तो सो ये यू कैन सी, अगर AB और AD जो है एक दूसरे के इक्वल है तो ये रोम्बस होगा। अगर एंगल A 90 डिग्री है तो ये एक स्क्वायर होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा। और अगर AB और AD भी इक्वल हैं और एंगल 90 डिग्री है तो ये एक स्क्वायर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग एंगल फॉर द गिवन क्वाड्रिलैटरल। मिसिंग हमें एंगल ढूंढना है क्वाड्रिलैटरल के लिए। सो इन द क्वाड्रिलैटरल ABCD, if angle A is 100, B is suppose 100 है, B दिया है 65, C दिया है 80, we have to find angle D. So what we have to do, 360 से हमें इन सबको ऐड करके 360 से subtract कर देना है। So on doing this we get 115 degree. So here the answer is 115. Similarly, children, you have to find the answer of the rest of the questions. Now question number 4 is construct a rectangle ABC given AB should be 6 centimeter and CB should be 4.5 centimeter. So यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, ABCD है, जिसमें AB हम बना देते हैं पहले AB 6 सेंटीमीटर आपको लेना है ऑन योर स्केल, फ्रॉम योर स्केल यू हैव टू ड्रॉ, और CB लेना है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है प्रोटेक्टर की मदद से वी विल फॉर्म दिस 90 डिग्री हम बनाएंगे। उसके बाद हम CB लेना है, तो ये दिस विल बी C एंड D। तो CB हमें 4 सेंटीमीटर अपने कॉम्पस की मदद से हमें क्या करना है, मेजर करना है स्केल पे, रूलर पे, और फिर यहाँ पे कट लगाएंगे हम दोनों जगहों पे। नाउ वी विल जॉइन दीज कट्स, सो वी विल गेट द रेक्टेंगल ऑफ दिस लेंथ एंड दिस width. Similarly, you have to do the rest questions children that are given you. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay muted.